हो गया। हेलो चेक 1 2 3 4। हाँ हो गया। हेलो चेक एक हेलो चेक 1 2 3 4। एक मिनट। हेलो हेलो चेक 1 2 3। हेलो चेक 1 2 3। हेलो चेक चेक 1 2 3 4 5 6। हेलो चेक 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 चेक। अभी आपको है ना ये म्यूट करना पड़ेगा। वो कहाँ से जा रहे हैं आपकी आवाज से? बिल्कुल आ रहा है। वही तो। कोई और तो ऑन नहीं है। सुनो 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 उसको अनम्यूट करो। किसको? उसको उस वाले को म्यूट करो। हेलो चेक हेलो 1 2 3 4। चेक हेलो हेलो चेक करना पड़ेगा ना। हेलो चेक 1 2 3 4। सुनो तो मैं कहता हूँ इतना सुनो। वो करो उसको ऑन। क्या बोल रहा था? That's fine. पिछले बार ऐसे कराया मैंने। ये ऑफ करता था, वो ऑन किया, लेकिन बात यहाँ पे आई, कहाँ पे? पोस्ट के पास से बात होगी, भले आपकी शक्ल यहाँ दिखेगी। उसको मैं बंद करूँ। हाँ खत्म, म्यूट कर दो, कोई जरूरत नहीं। हेलो माइक चेक 1 2 3 4। हेलो टेस्ट टेस्ट। हेलो चेक चेक 1 2 3 4। हेलो यहाँ हो रहा है, देखो ठीक बात। है ठीक है। शक्ल का दिखाने के लिए कैमरा ऑन करेंगे। इसका स्पीकर हमने ऑफ कर दिया है और ये तो म्यूट है, इसको वीडियो ऑन करना है, बस वीडियो ऑन करके शक्ल यहाँ दिखाएगा, बात यहाँ हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अरे सर
Good morning to all. Just after 5 minutes, Director sir will take the session. I would like to request all officers, please start your video. Good morning, respected sir and ma'am. After 5 minutes, yeah, exactly 11 o'clock, we will start our session. Please stay with us.
May I start, sir? Is my voice audible? Sir, please raise your hand. Thank you, sir. Respected Sri Anil Kishore Yadav, IPS Director CAPT, and all the Director General of all the states and UTs and all the heads of the regions of all states. I, Dasrathi Parida, Assistant Director, welcome you all in the 2 hours webinar on ये इसके sensitizing लिए ना स्पीकर आता है of heads स्पीकर of आएगा region. हाँ वो होता है इसमें लगता है तो उससे आवाज बढ़ जाती है वो मंगवाओ आज ये फोन वाला आ जा रहा था अब फोन वाला तो आएगा लेकिन इसके लिए मंगाओ Please अब इसमें mute कुछ your सुनाई नहीं दे रहा Anil Kishore Yadav, IPS, in the Indian Police Service in the year 1996, representing Bihar cadre. Sir joined on 23rd November 2023 for the further contributing as a director CAPT. Before that, sir as a additional director general of training in Bihar. Without wasting precious time of sir, I would like to hand over the session to Honorable Sir. Over to you, sir. Thank you. Jai Hind and good morning, officers. Representative from all prison and correctional services of states and UTs. As we are aware, new criminal laws have been enacted and duly notified on 25th December of year 2023, 2 months back. From Ministry of Home Affairs, there is initiative to sensitize and capacity building of state and union territories officers belonging to each and every stakeholder departments. So prison related reforms are also there in new criminal laws. So regarding them and in general also, new criminal laws are to be known to every stakeholder in a correct perspective and comparative manner also regarding old criminal laws. And of course, these criminal laws are yet to come into force. That power when to enforce, since when these will be enforceable, that power is vested into executive, that is central government of India, that is vested through those courts itself by Indian Parliament. So once
those dates of enforcement are announced, declared by central government, we will have to full-fledgedly work on new criminal laws provisions directly from that very moment. But before that, during this transition period, when those criminal laws are still in vogue, Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, and Indian Evidence Act, but at the same time, during this transition period, we have to build our capacity regarding new criminal laws. Police officers, prosecutors, prison and correctional services officers, and judiciary. Every stakeholder has to be sensitized upon these issues, and BPRND, Bureau of Police Research and Development, headquartered at Delhi, has been assigned by Ministry of Home Affairs to contribute on their part. So this academy, Central Academy for Police Training, located in Bhopal, is directly under BPRND, Bureau of Police Research and Development, under Ministry of Home Affairs, has been tasked to sensitize on these issues, prison and correctional services officials. So, I will very briefly rather, present about new criminal laws, major changes, in very brief, as I said, through a PowerPoint presentation. We will discuss very briefly about these new criminal laws, general provisions, what are the changes in comparison to respective other criminal laws which are in vogue yet. But later on, once these dates of enforcement are announced, declared, then they will cease to exist. So, scheme of this PPT is like this. In starting, new criminal laws in brief. After that, certain provisions which are directly concerning prison and correctional officers. And after that, I will discuss those two modules, 1 day module and 3 days module, designed by BPRND for prison and correctional services officials, to be conducted by CAPT, Bhopal, this academy, and letter regarding that have already been sent to you. I believe that must have been received by your good offices, respective states and UTs. So now a brief survey or brief discussion about new criminal laws. So these three laws were enacted finally after getting due consent of Honorable President of India on 25th December 2023. On the very same day, these were published in Extraordinary Gazette of India. So first act is BNS, in short, Bharatiya Nyaya Sanhita. Bharatiya Nyaya Sanhita, that is Act number 45 of year 2023. BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, and Indian Penal Code is corresponding existing code to this Bharatiya Nyaya Sanhita. So, in concerning slides, we will compare it with Indian Penal Code. Bharatiya Nyaya Sanhita, Act number 45, 2023. Next slide, please. So, there are 358 sections in Bharatiya Nyaya Sanhita, whereas there are 511 sections in Indian Penal Code. This decreased number of sections in BNS mainly owes to the fact that in IPC there are independent sections for definitions for each terms, defining each term
there is an independent separate section there in Indian Penal Code. Whereas in Bharatiya Nyaya Sanhita, these all definition sections are compiled in a single section, that is section 2 of BNS definition section, in a single section through the subsections, various subsections, these definitions are covered. So those many sections of definition separately in IPC are now in a form of subsections of section 2 of BNS. That's the major reason of these decreased number from 511 to 358. 20 new offenses have been added in BNS. Kindly go to hyperlink. These 20 are completely new provisions, new offenses which have been created through new code BNS. So these are in brief mentioned here, though we don't have sufficient time to cover these severely, but these are the sections which are scrolling in this hyperlink. So there, please go back to that hyperlink again. जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक नहीं हटाना, उसको थोड़ा जूम कीजिए, ऊपर चलिए. So section 48, abatement outside India for offenses in India. Section 69, sexual intercourse by employing deceitful means. This is related to those matters, those cases where a woman alleges that some male sexually exploited her on the pretext of marriage, that he'll definitely marry her, and on that pretext sexual intercourse was committed. So this was not duly covered in Indian Penal Code because there was consent and the woman was adult. In that case, this was not properly covered. So to cover that, this section 69 has been added by lawmakers. Section 95 is again very important, which is related to hiring, employing, or engaging a child to commit an offense. So engaging or hiring, employing a child to commit an offense, earlier in IPC, this is only been covered through provisions related to conspiracy and abatement. But now this is a separate section. Then in murder related section, there is subsection added which is going to cover the offense which is in common parlance known as mob lynching. 5 or more people murder someone on the different grounds like caste or religion, community, etc., etc. So that mob lynching provision is covered with the section of murder itself with the help of a separate subsection, 1012 section. So section 1042 is there, causing death by negligence. In Indian Penal Code, a corresponding section is section 304A IPC, death caused by rash and negligent act. Here it is causing death by negligence. It is a new thing about this provision here in BNS is that registered medical practitioners negligence causes death, then that case is specifically covered here. This is a new addition to that is clear addition in comparison to 304A IPC. Very important new provisions in BNS are organized crime related sections. Organized crime, संगठित अपराध. संगठित अपराध के बारे में
पहले से इंडियन पेनल कोड में अलग से प्रावधान नहीं थे। वो 120 बी जो कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड सेक्शन है उससे और दूसरे संबंधित सेक्शन हैं उनके माध्यम से कवर होते थे। लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन यहाँ दे दी गई है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अलग से पनिशेबल बनाया गया है। और ये these organized crimes are of two categories. Section 111 is organized crime, then Section 112 is petty organized crime. So organized crimes of minor nature, relatively petty nature, are covered here in Section 112. Am I audible? If there is any issue, someone may raise his or her hand to confirm. There has been some technical glitch and that is regretted. And to confirm that again there is no such glitch, I want your cooperation to confirm whether am I audible or not. Thank you. Thank you, officer. So that means I am audible to you guys. So Section 111 organized crime, Section 112 petty organized crime. Then there is another addition, very important addition, that is terrorist act. Terrorist act is being defined in Section 113 of Bharatiya Nyaya Sanhita, which was earlier not available in Indian Penal Code. There were different special acts, special provisions like UAPA Act, etc. But in main penal provision, main code, this was not defined. So now this is provided here in Section 113, Terrorist Act. Similarly, Section 117, subsection 3, voluntarily causing grievous hurt resulting in permanent vegetative state. This has been added. Such provision is not there in Indian Penal Code, but this is being added here in BNS. Section 117, subsection 3. Another subsection of that same section 117 is subsection 4, voluntarily causing grievous hurt by 5 or more people. This provision corresponds and related to that provision which is added regarding mob lynching. So where that person, that poor victim gets killed, then that provision, mob lynching provision applies. But in a case where these victims are seriously injured, grievously injured, but fortunately not killed, in that case, this subsection will cover that sort of grievous hurt also by 5 or more people. So this is Section 117, subsection 4. Similarly, Section 152, acts endangering sovereignty, unity and integrity of India. भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली जो अपराध हैं उनको कवर करता है ये सेक्शन 152. IPC में, in IPC there is section 124A which corresponds to closely corresponds to this section, इससे संबंधित है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत बुनियादी अंतर है. Section 124A IPC is called sedition, that is called राजद्रोह. गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और इस तरह की चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं. जबकि ये सेक्शन 152 राजद्रोह की बात नहीं करता है, गवर्नमेंट की बात नहीं करता है, बल्कि ये देश की बात करता है. इंडिया की सॉवरेंटी
इंटीग्रिटी यूनिटी की बात करता है, गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है, इसलिए अब ये सेडिशन नहीं है, ये डिफरेंट सेक्शन है, सेक्शन 152। सेक्शन 197 1D, publishing false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India. This is also added in BNS, and this is closely related to section 152 in the nature of this offense. Section 226, attempt to commit suicide to compel or restrain exercise of lawful power. This is very important section. ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो हमने देखा है कि कई बार पब्लिक से कोई लोग जिनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो कई बार पब्लिक अथॉरिटी के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ऑफिस के सामने या कमिश्नर ऑफ पुलिस की ऑफिस के सामने दे ट्राई टू कमिट सुसाइड कि मेरी ये मांग नहीं मानी गई है, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो उस तरह के मामलों को कवर करने के लिए ये सेक्शन 226 जोड़ा गया है। और भी महत्वपूर्ण जो प्रावधान जोड़ा गया है बीएनएस में, वो है 304 सेक्शन 304 स्नैचिंग। द most affected are of this crime of snatching are women. बाजार में, मार्केट प्लेस में, कभी मेला में या कहीं बीजी प्लेस में, their jewelry is snatched by those criminals. So this section is separately covered in as section 304 for snatching. There are many sections, subsections related to theft, which is related to mainly transport vehicles, which was not exclusively a separate category of crime in IPC, Indian Penal Code. There is not separate category of theft like this, but this has been made as a separate category. Theft of any means of transport used for the transport of goods or passengers, किसी भी तरह के व्हीकल की चोरी, और इसके साथ ही अन्य सबसेक्शन में कवर हो रही है वैसी चोरी जो इन व्हीकल्स में रखे हुए सामान की कर ली जाती है। व्हीकल्स में किसी का बैग रखा हुआ है, वो उधर गए और उन्होंने चुरा लिया और निकाल कर ले गए। ये सारे सेक्शन और सबसेक्शन इसी से जुड़े हुए हैं, थेफ्ट रिलेटेड प्रावधानों से। Then theft of any property of the government or of a local authority. ये जो सरकारी या स्थानीय प्राधिकार होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी की किसी तरह की चोरी, इसको अलग से ऑफेंस बना दिया गया। इसी तरह से पोजेशन ऑफ काउंटरफीट, सेल, जो जाली मोहर, प्लेट वगैरह, इनका भी। तो इस तरह से 20 नए, टोटल 20 न्यू ऑफेंसेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन भारतीय न्याय संहिता। कृपया वापस चलें। इसी तरह से नाउ 33 offenses, punishment of imprisonment has been increased. Punishment in terms of imprisonment has been increased in 33 offenses. Hyperlink, please. We'll briefly go through these offenses, list of these offenses. थोड़ा zoom करिए। ये सब हैं जिनमें सजा फिर बढ़ा दी गई है पहले से। सेक्शन 8, 5, 57, 99, 104, करेस्पॉन्डिंग सेक्शन उसके दाहिनी टेबल में, राइट साइड वाली टेबल में है। I would like to hear from officers attending this webinar whether would you like to get the copy of this presentation? Any of you may unmute herself or himself and
अनम्यूट करके बताएं खुद को इंट्रोड्यूस sir. करते हुए। Yes, sir. Yes, sir, we will like to have a copy. Yes, sir. Yes, sir. We would like to have a copy, sir. Yes, sir, we need, sir. Sir, it can be shared in the group itself, sir. Subject to other permissions. ग्रुप बना हुआ है किसमें शेयर Yes, sir. सर प्लीज Okay, Yes, sir. thank you. Sir, required copies. Sir, That copies. will help you to go through those things for yourself in a detailed manner and refer them also whenever required. Otherwise, here, due to paucity of time, we are unable to discuss those provisions properly. Let us go back to main slide. We'll in any case going to share. We are going to share this PPT. So next is in 83 offenses, the punishment of fine has been increased. Fine has been increased in 83 instances, and this was very natural as over a period of time, due to this inflation and all economic reasons, value of rupee get diminished. So these fines have been increased from 5 times to 100 times. Most of the cases 5 times, then 10 times, then even 100 times fine has been increased. So kindly go to hyperlink. So these are the offenses where amount of fine has been increased. You can see that later. Let us go to main slide. वापस चलें स्लाइड पर, मुख्य स्लाइड पर. Next slide. Yes. In 23 offenses, necessary minimum punishment has been introduced. This is very important. पहले से जो आईपीसी में है, बहुत सारे प्रावधानों में इम्प्रिजनमेंट के में मोस्टली ये लिखा रहता है कि may be punished with the imprisonment which may be extend to 10 years or 7 years or like in that manner, कि ये पनिशमेंट रहेगा जो 10 साल तक का दिया जा सकता है, लेकिन उसमें मिनिमम पनिशमेंट की अवधि नहीं लिखी हुई है. तो इससे फ़ायदा एक्यूज को मिलता था. वो जज साहब जुडिशल ऑफिसर पर डिपेंड करता था कि उसको बहुत कम भी सज़ा दे सकते थे. वो 2 महीने की भी दे सकते थे 10 साल वाले केस में, जिसमें 10 साल तक. तो अब यहाँ किया गया है इन भारतीय न्याय संहिता, in 23 instances, clear necessary minimum punishment has been added. So where in these 23 offenses where lawmakers found that this offense is clearly more strict provisions should be there, therefore they have provided that minimum threshold से, लेकिन वो 5 साल से कम नहीं होगा. मान लीजिए 10 years देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं लिख दिया कि 5 साल से कम नहीं होगा. In this manner that 5 years has been added as necessary minimum punishment. So in that particular case, this will be like 5 years to 10 years. So this is very important provision. So we may have a look. Please. Yes. थोड़ा जूम कर दें और जूम करें थोड़ा. हाँ, like section 99, section 105, section 1112B organized crimes, 113, like these offenses where in 23 instances a clear-cut provision has been there, made there. Please, main slide. वापस. In 6 offenses, the punishment of community service has been introduced. This is a new provision of community service. In Indian Penal Code, there is no such punishment. Community service जैसा कोई punishment Indian Penal Code में नहीं है.
हमें पता है किस किस तरह के पनिशमेंट इंडियन पेनल कोड में है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस उसमें नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में कम्युनिटी सर्विस भी एक पनिशमेंट के रूप में जोड़ा गया है, और 6 मामले ऐसे हैं, 6 ऑफेंसेज ऐसे हैं, 6 ऑफेंसेज, 6 क्राइम्स, 6 अपराध ऐसे हैं जिनमें कम्युनिटी सर्विस भी सजा के तौर पर डाला गया है, प्रोविजन किया गया है। तो वो सेक्शन है सेक्शन 202 BNS, सेक्शन 209 BNS, सेक्शन 226, सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, सेक्शन 355 एंड सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 ऑफ BNS। इन 6 मामलों में कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। मेन स्लाइड। इंडियन पेनल कोड से 19 sections have been deleted. 19 sections have been deleted from Indian Penal Code. 19 धाराएं इंडियन पेनल कोड से हटा दी गई हैं, जो BNS में उस तरह की धाराएं करस्पॉन्डिंग नहीं मिलती हैं। वो 19 जरा हम देखें, हाइपरलिंक। Sections deleted from the IPC: सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन, ये सारे डेफिनेशन से संबंधित हैं, ये सब हटा दिए गए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। इंडिया स्वतः सिद्ध है क्या है इंडिया, इसलिए इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट हटा दिए। इसी तरह से डेफिनेशन संबंधित 4-5 सेक्शन हटाए गए हैं। देन सेडिशन, जैसा मैंने बताया अभी पहले बात करते हुए कि सेक्शन 124A राजद्रोह से संबंधित था, वो हटा दिया गया है। अब राजद्रोह नहीं है, अब देशद्रोह है, जो सेक्शन 152 में है। इसी तरह से और भी सेक्शन 153AA, सेक्शन 236, सेक्शन 264, 65, 266, 267, ये इस तरह से इतने सेक्शंस हटा दिए गए हैं हमारे इंडियन पेनल कोड से। अब भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के सेक्शन नहीं हैं। मेन स्लाइड। सेक्शन 358 रिपील एंड सेविंग्स भारतीय न्याय संहिता का लास्ट सेक्शन है, जो ये दिखाता है कि इस कैसे रिपील हो रहा है और क्या चीज़ बची रह जाएगी, किसका किस पर असर पड़ेगा। ये पहले से ही कानून में ये व्यवस्था रहती है। रिपील एंड सेविंग्स करके ये सेक्शन नए कोड में रहता है। नया कोई कानून पुराने को हटा के बनता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। जूम करें और जूम करें और करें जूम। हाँ, थोड़ा ऊपर ले जाएं। यस, थैंक यू। तो इंडियन पेनल कोड 350 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ये इंडियन पेनल कोड रिपील हो जाता है। जिस दिन से ये लागू होगा उस दिन से इंडियन पेनल कोड रिपील माना जाएगा। और इसके बाद में फिर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये जो अधिकारी बातें जारी रखे हुए हैं इस बीच में, वो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, वीडियो ऑफ कर सकते हैं। उनके लिए बात करना ज़रूरी है, तो वीडियो ऑफ कर लें, जिसलिए डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। थैंक यू। तो इस रिपील का असर किन किन स्थितियों पे नहीं पड़ेगा, वो इसमें दिखाई गई हैं सबसेक्शन 2 में, ABCDE में। तो आप इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि किन स्थितियों में इस रिपील का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोटे तौर पर जो केस पहले रजिस्टर कर लिए गए हैं इंडियन पेनल कोड में, ये भारतीय न्याय संहिता लागू होने से पहले ही जो रजिस्टर केस दर्ज हो जाएंगे, उनका सारा आगे की कार्रवाई, ट्रायल, ये इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग उसी हिसाब से चलेगी, जैसे कि नया संहिता आई ही ना हो, जो पहले से ही। क्योंकि कानून इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किए जा सकते। जो अभी भी केस जो दर्ज हो रहे हैं, जिस प्रक्रिया के तहत हो रहा है, वही चीज़ें जारी रहेंगी। ये इसमें आगे बताया गया है कानूनी भाषा में।
मेन स्लाइड प्लीज। अब अगली स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ओर। ये वर्ष 2023 का 46वां कानून है, एक्ट नंबर 46 ऑफ ईयर 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसे हम संक्षेप में BNSS कह रहे हैं। अगली स्लाइड। ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इन बिल्स को पेश करते समय जो दिया था। अब तो ये पारित होकर कानून बन गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। BNS में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन कंपैरिजन टू CRPC। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तुलना में ये नया कोड में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इनके बारे में हम लोग संक्षेप में बात करेंगे। There are 531 sections in BNSS, whereas there are 484 sections in CRPC. CRPC की 484 सेक्शन की जगह यहाँ BNSS में 531 सेक्शंस आए हैं। हालांकि ये जो अंतर दिख रहा है संख्या में 47 सेक्शंस का, ये सारा इसलिए नहीं है कि 47 सेक्शन नए जुड़े हैं। नए तो सिर्फ 9 सेक्शन ही जुड़े हैं, लेकिन बाकी 38 इसमें पहले से जो सेक्शन बाद में CRPC के बाद में भी अमेंडमेंट होते रहे और A, B इस तरह से बहुत सारे सेक्शन जोड़े जाते रहे, उनको डिफरेंट सेपरेट सेक्शन का रूप दे दिया गया है BNSS में। इसलिए सेक्शंस की संख्या बढ़ी है मुख्य तौर पर। CRPC में 37 अध्याय हैं 37 CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जबकि BNS में 2 चैप्टर बढ़ गए हैं। ये 2 चैप्टर नए किसी प्रक्रिया के बारे में उस वजह से नहीं बढ़े हैं, बल्कि पहले से कुछ चैप्टर CRPC में आगे संशोधन होके A करके बढ़े थे। जैसे चैप्टर 7 के साथ ही 7A भी जोड़ दिया गया था बाद में, मजिस्ट्रेट से संबंधित सेक्शन है, वो चैप्टर है। तो अब वो चैप्टर 7A के बजाय वहाँ वो चैप्टर 8 हो गया। तो इस तरह से एक चैप्टर यहाँ बढ़ गया। लाइकवाइज समरी ट्रायल के साथ ही दूसरा चैप्टर जोड़ दिया गया था, वो प्ली बार्गेनिंग के नाम से। अब वो प्ली बार्गेनिंग स्वतंत्र रूप से अलग सेक्शन हो गया है। इस तरह से ये अलग चैप्टर हो गया है। इस तरह से ये 2 चैप्टर्स एडिशनल हो गए हैं पहले से ज़्यादा देखने में। हालांकि वो टॉपिक और सब्जेक्ट उसमें जो डिस्कस किए गए हैं उनमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन वो उसके साथ जो अमेंडमेंट से नए चैप्टर जोड़े गए थे A करके, उनको डिफरेंट न्यूमेरिक नंबर दे दिया गया है। 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं। 9 न्यू सेक्शंस हैव बीन एडेड इन BNSS इन कंपैरिजन टू CRPC। वो हम लोग देखेंगे इस हाइपरलिंक में। जूम करें। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफ पर्संस, ये नया सेक्शन 86 जोड़ा है। सेक्शन 105 which is very important in respect to police officers, recording of search and seizure through audio video electronic means। जब से ये प्रावधान लागू होंगे तब से हमको हर सर्च और सीजर को अनिवार्य रूप से मैंडेटरीली अनिवार्य रूप से हमें सभी तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी करनी होगी। ये पुलिस ऑफिसर्स को इसके लिए खुद को हर तरह से तैयार करना होगा। जब से लागू होगा तब से ये कार्रवाई अनिवार्य हो जाएगी। सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेक्शन 172 पर्सन्स बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस। ये सेक्शन जोड़ दिया गया है कि भाई कानूनी निर्देश
विधि सम्मत कानून सम्मत निर्देश कोई भी अगर पुलिस द्वारा दिया जाता है तो वो मानना बाध्यता होगी किसी नागरिक के लिए. So this is section 172 newly added. Section 336 evidence of public servants, experts, police officers in certain cases. This is going to be a great relief for public servants who due to their position, their official discharge of duty, they were asked to attend someone to attend the court for their उनकी गवाही के लिए विटनेस के रूप में जो बुलाए जाते थे. अब इसमें राहत ये दी गई है कि उनकी जगह पर अगर उनका आना मुश्किल है, अनावश्यक डिले हो सकता है, तो उनकी जगह पर उनकी पोस्ट पर जो उत्तराधिकारी थे, जैसे कोई एसएचओ थे, उनको आईओ के रूप में, एसएचओ के रूप में कोई गवाही देनी थी, तो उनको, उन व्यक्ति विशेष को, वो अब रिटायर करके कहीं चले गए, कहाँ रह रहे हैं, उनको परेशान नहीं किया जाएगा. अब उनकी जगह पर रिकॉर्ड के आधार पर जो प्रेजेंट एसएचओ होंगे वही गवाही दे सकेंगे. Likewise, some medical officer, some doctor who examined that particular report was given by them, injury report or post-mortem report, whatever the case may be. So they may not necessarily be called by themselves, but rather through institutional memory and through records, some public servant in their position in present day can deposit on behalf of them and can prove that veracity of that document. And whenever they are required, they can also be their evidence can be taken in the trial or court in any proceeding through electronic means. तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी सरकारी अधिकारियों को जो जिनको गवाही देनी होती है. तो दिस वाज section 336. Section 356 is again new section in BNSS. Section 398 Witness Protection Scheme. This new section has been added to provide protection to witnesses. This has been made responsibility of state governments, and state governments through this section 398 has been directed to prepare their own schemes for protecting those witnesses. Section 472 Mercy Petition in Death Sentence Cases. This section has been added in BNSS. जहाँ डेथ सेंटेंस मिलते हैं तो उनमें दया याचिका के बारे में, कैसे दया याचिका की जा सकती है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसकी पूरी प्रोटोकॉल इस सेक्शन के माध्यम से अब निर्धारित कर दी गई है. सेक्शन 530 ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, मूलभूत सुधार लाने वाला ये प्रावधान है जिसमें ट्रायल और अन्य प्रोसीडिंग्स कोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकेंगी. इसके लिए प्रॉपर एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कंसर्न अथॉरिटीज़ तैयार करेंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. एंड दिस विल बी ए ग्रेट रिलीफ और ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म हमारे क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में ये माना जाएगा. सेक्शन 530 ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. मेन स्लाइड. In 35 places, electronic means have been added. क्या कर रहे हैं?
39 subsections oblique clauses have been added. So many of these are related to definition sections, like definition of audio video electronic means, definition of bail bond, definition of bond, definition of electronic communication. So these 5 definition related sections has been added, subsections oblique clauses, I mean. Section 20 Directorate of Prosecution, there subsection 1B has been added, district Directorate of Prosecution in every district. Likewise, this total 39 provisions has been added in form of new subsections oblique clauses. Main slide. नीचे की लाइन में जाएगा. Forty new provisos have been added. 40 new provisos have been added. Hyperlink में हम लोग देखें कहाँ provisos. Provisos means in a section where lawmakers want to say something related to that, but to qualify that through that phrase, provided that. हिंदी में कहते हैं परंतु ये इस तरह से. So these provisos have been added. Section 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित में ये जोड़ा गया है, provided that for national capital territory of Delhi and so. So like these 39 provisos have been added in BNSS. In 35 places, electronic means have been added. Because this audio video electronic means through those means, there has been radical changes to even conduct every trial and every proceeding through that process. So in the procedural code, there at many places this was a requirement to add electronic means. So 35 places electronic means have been added. 35 timelines have been introduced. Hyperlink. Timelines. So these 35 timelines has been added, which concern each and every stage related to procedure, criminal justice delivery system procedure, and these are related to each and every stakeholders. Like police related timelines are there. Similarly, expert has to submit those reports in given time frame, and even courts will also be bound by certain timelines. So 35 timelines have been added in BNSS. Four new explanations have been added in BNSS. Similarly, 14 sections have been deleted. Deleted वाली hyperlink जाइए.
deleted provisions of CRPC. These 14 provisions will not find any place in BNSS. So these are many of these are related to definitions. Definitions related to India, metropolitan area, pleader, prescribed, metropolitan areas. So these are related. These related definitions have been removed because these sections like metropolitan, magistrate, and all these provisions will not find any place anymore in BNSS, as these courts have been provision of these courts have been deleted. This distinction. So there will be judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, chief judicial magistrate, like that only. In metropolitan towns like Delhi, Bombay, Chennai, earlier there were British provisions of metropolitan area and metropolitan magistrate. So that provision will not exist anymore. So those related sections have been deleted from new code. Subordination of assistant sessions judge, because this post, particular office of assistant sessions judge has been removed. That is, that will not remain anymore in new code. So related provision is also deleted. Similarly, metropolitan magistrates, additional chief metropolitan magistrate, etc., chief metropolitan magistrate, etc., special metropolitan magistrate, section 18. Similarly, that is also removed. Section 19, subordination of metropolitan magistrates. So these top 10 provisions, these serial number 1 to serial number 10, these have been deleted as those related concept or those related offices won't exist anymore in new code. That's why these provisions had to be deleted. Now there is serial number 11, section 27, jurisdiction in the cases of juveniles. So this jurisdiction related provisions, section 27, also been deleted, because as we know, most of us, these stakeholders, we know that now juvenile justice related exhaustive act is in provision, in vogue, already enacted. A special act, JJ Act, was first time enacted in year 2000, JJ Act 2000. Then later on that was reenacted, नए सिरे से फिर उस कानून को बनाया गया in the year 2015. So now JJ Act 2015 to 2015 JJ Act applies on every procedure related to juveniles. That's why lawmakers found this provision useless and redundant, and thereby subsequently deleted section 27. So section 144A, section 153, section 404 also have been deleted. Main slide. Total 177 subsections have been modified in some way or the other. Section 531, which is the last section of BNSS, deals with repeal and savings. Like as we have seen in case of BNS, repeal and saving. In similar vein, this last section of BNSS also deals with repeal and savings. Please hyperlink.
So in similar manner, as in Bharatiya Nyaya Samhita's last section, there are also provision in to similar effect that notwithstanding such repeal, if immediately before the date of which this Samhita comes into force, there is any appeal, application, trial, inquiry or investigation pending, then such appeal, application, trial, inquiry or investigation shall be disposed of, continued, held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973, as in force immediately before such commencement herein, as if this Samhita had not come into force. मतलब वही है कि जो चीज़ें पहले से इसके नई संहिता लागू होने से पहले जिस प्रक्रिया के तहत चल रही थी वो है सीआरपीसी, वो उन मामलों में जो ऐसी चीज़ें पेंडिंग हैं वो उन मामलों का डिस्पोजल उस तरह की प्रोसीजर्स का सभी सीआरपीसी के हिसाब से होगा जैसे कि नई संहिता आई ही न हो, इस तरह से। यानी भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू नहीं किया जा रहा, नहीं लागू किया जा सकेगा। जो पहले से केसेस दर्ज हुए हैं पहले से चली आ रही व्यवस्था के तहत, उसी व्यवस्था के तहत उन मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसकी व्यवस्था ये लास्ट सेक्शन BNSS का, that is section 531, this is to that effect. Next. Next slide. Now we come to the last of these three new criminal laws, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. As this is in case of earlier provisions, this Bharatiya Sakshya Adhiniyam is the smallest of all three laws, criminal major acts. ये उनमें सबसे छोटा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दिस इज एक्ट नंबर 47 ऑफ ईयर 2023, वर्ष 2023 का 47वां कानून है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके बारे में हम लोग संक्षेप में बात करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। When in short, we can call this act as BSA for the sake of convenience. So, Bharatiya Sakshya Adhiniyam changes in comparison to Indian Evidence Act. There are 170 sections in BSA, whereas there are 167 sections in Indian Evidence Act. So, only difference of 3 sections has been here in this case. 24 provisions have been modified. Hyperlink, please. Modifications in BSA. Section 2, subsection 1, clause C disproved in relation to fact. So there is a modification in this subsection. Then again there is a modification in document related provisions. Then again evidence related provision is again modified. Similarly, these 24 instances are there where modifications took place in Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Means 2 new sections and 6 subsections have been added in BSA.
hyperlink. So these newly added sections are section 61, which is related to admissibility of electronic or digital record, and section 170, repeal and savings, last section. In Indian Evidence Act, that was a completely new act enacted by those colonizers, rulers, British rulers. So there was no earlier act to that effect to be repealed. So there was no such provision. But here, as our lawmakers have repealed that provision, they have planned to repeal that. That's why this section 170, repeal and saving, is being added here. And that section 61, of course, is related to admissibility of electronic or digital records. New subsections, as we can see here, definitions related. Then section 52, facts of which court shall take judicial notice. There is also modification, and secondary evidence related modification is there, which is mainly related to oral admissions included in secondary evidence. Then another modification is there, again related to secondary evidence. Then section 58 also relates to secondary evidence, where this modification is has took place. Then section 63, admissibility of electronic records and through an intermediary, this provision also has been modified. Six sections have been deleted from Indian Evidence Act. That so hyperlink please. So deleted provisions from Indian Evidence Act are there. Definition of India, like two other laws also. Here this was redundant, this definition. This was not required anymore. That's why this has been deleted. Then section 22A, when oral admission as to contents of electronic records are relevant, this is deleted. There is detailed provision now. So this was not required anymore. Presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature. So there was a mention of England, which was not required anymore here in independent India. So that is deleted. Presumption as to telegraphic messages. This is largely incorporated in that electronic related provisions. So this is not separately needed now. So this is deleted. Section 113, proof of cession of territory. This was again redundant, so deleted. Section 166, power of jury or assessors to put questions. So this jury or assessor system is not here in our jurisprudence practiced anymore. That's why this has been deleted. Explanations deleted in Indian Evidence Acts are 4. Section 26, confession by accused while in custody of police not to be proved against him. This. Then section 65B, subsection 5. Then section 73A, proof as to verification of digital signature. And section 88A, presumptions as to documents 30 years old. So these explanations have been deleted from Indian Evidence Act. They are no more here in Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Main slide. So now we come to this final section of this third law, that is Bharatiya Sakshi Adhiniyam. The last section of that, again, repeal and savings. So repeal and savings of BSA is again to that similar effect, which is there in BNS and BNSS. Notwithstanding such repeal,
if immediately before the date on which this adhiniyam comes into force, there is any application, trial, inquiry, investigation, proceeding, or appeal pending, then such application, trial, inquiry, investigation, proceeding, or appeal shall be dealt with under the provisions of the Indian Evidence Act 1872 as in force immediately before such commencement, as if this adhiniyam had not come into force. तो पहले से जो चीजें जिस तरह से केस दर्ज हो चुके हैं वो प्रक्रिया वैसे ही चलती रहेगी. तो दिस इज रिपील एंड सेविंग्स. मेन स्लाइड. तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 नए कानूनों के बारे में संक्षेप में जो हमने कवर किया, इट्स बहुत ही ब्रीफली. तो मैं जानना चाहूँगा, ये आप लोगों में से जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनकी किसी तरह की क्वेरीज हैं इनके संबंध में. फिर हम आगे के पार्ट में प्रेजेंटेशन के में आज के वेबिनार के आगे के पार्ट में बढ़ेंगे. हाँ, आंध्र प्रदेश से जो अधिकारी जुड़े हुए हैं उनका कुछ इसमें कोई अपना कोई ऑब्जर्वेशन हो, कुछ कहना हो उनको. आंध्र प्रदेश प्लीज. आंध्र प्रदेश. Yes, sir. Any observation from No, sir. okay, thank you. Arunachal Pradesh. No, sir, we have no observation. Assam. No, sir. Assam. No. Thank you. Bihar. जय हिंद सर. नहीं, सब ठीक है सर. Thank you. Jai Hind. Chhattisgarh. Sir. Chhattisgarh. No, sir. Thank you. हरियाणा. हरियाणा कुछ कहना हो. हरियाणा. जैन सर नहीं सर, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं. जैन सर. जैन Okay. सर. सर इसमें एक जो आपने बताया सर, इसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जी. सर जो कई चीजें थी जो प्रिजन से रिलेटेड थी, तो जो इसमें ठीक हो सकती थी, और कुछ उसमें एम्बिग्युइटीज थी सर. जैसे पुराना 269 है सर सेक्शन, पुरानी सीआरपीसी का. मैं ठीक से समझ नहीं पाया, सॉरी. थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज. सर जो आपने बताया सर ये तो क्लियर है, लेकिन जो पहले कुछ सेक्शंस थे ऐसे सर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दे रखी हैं जो सीआरपीसी के प्रोविजन है पिछली के, उससे अगेंस्ट, बट वो इसमें इंक्लूड नहीं हुई सर. तो अब हमको सर ये नई सीआरपीसी माननी है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट माननी है? ये जो बीएनएसएस में थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक वो चीजें मैं 304 है सर, फिर 304 नई बीएनएसएस में सर. नई बीएनएसएस में 304. 304 बारे सर. में आपका मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दिए थे, उनकी स्पिरिट के अगेंस्ट है, ऐसा आप समझते हैं क्या सर? तो क्या है उसका जरा बताएंगे क्या है. और सर 304 डी है ना सर, जो 304 का पार्ट डी जी सर, वो हमें रेस्ट्रेन करता है कि हम किसी भी बंदी को प्रोडक्शन वारंट पे अपनी जेल से 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर पेश नहीं करेंगे, और इसमें शैल है सर, हम बाउंड है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और इसमें क्या बीएनएसएस सर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई हम बाउंड है पेश करने को. अगर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट कहीं भी मांगता है बंदे को प्रोडक्शन वारंट पे, तो हम बाउंड है.
और ये हमारे को बिल्कुल मना कर रहा है सर, शैल से मना कर रहा है, मैं भी नहीं कह रहा, शैल से मना कर रहा है सर। बीएनएसएस भी और पुरानी सीआरपीसी भी ऐसी कह रही थी सर। हाँ, तो ये अभी इसमें चूंकि इन्होंने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से ट्रायल सेक्शन 530 सीआर वो तो कर बीएनएसएस। दिया सर, बट वो इंसिस्ट करते हैं सर हमारे कि पहली बार जैसे कोई सर अरेस्ट ही नहीं हुआ है, तो वो हाँ, रिमांड के लिए तो सर हम मांगते ही मांगते हैं ना, और हम भेज नहीं सकते, तो हम तो फंस गए सर। नहीं, मुझे लगता है जब तक जैसे नया जब कानून लागू होगा बीएनएसएस जिस दिन से, तो कानून तो सर्वोपरि होता है, उसके फिर इंटरप्रिटेशन में जब सर वो अलग तो से सेम है ना। अभी सर हमने बात की थी हमारे जो हाईकोर्ट के जस्टिस है उनसे भी, जी वो कह रहे हैं कि भाई आपकी ऑब्जर्वेशन सेम थी, आप इसमें कुछ नया लिखते तो आप बाइंडिंग नहीं होते सुप्रीम कोर्ट से। जी आपने सेम ही लिखा है, वर्ड टू वर्ड, कोमा टू कोमा सेम रखा है आपने, तो फिर तो बाइंडिंग है आपकी, पहले में बाउंड थे तो अगले में भी बाउंड रहोगे आप। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते तो फिर चैलेंज हो सकता था, आपने चेंज तो इसमें कुछ भी नहीं किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो आपका जो आपकी जो इसमें समझ है और जो आपने दूसरे अधिकारियों से बात की है या हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर से, तो सर चूंकि वर्बेटिम वो प्रोविजन वैसा का वैसा उठा लिया गया है, तो तो वैसी सर स्थिति में पुराने केस सर लॉज बाइंडिंग रहेंगे ही ये बाइंडिंग चीज़ें। रहेंगे सर। हाँ, इनको कहीं न कहीं फिर लॉ मेकर्स के सामने से किसी तरह से ओवरसाइट हुई होगी या आगे फिर ये इशू कंट्रोवर्शियल बना ही रहेगा। मुझे लगता है वही कि दिक्कत है सर। आपकी ये जो आशंका है कि हम लोगों के लिए ये चीज़ क्लैरिफाई यहाँ नहीं हो पाई, तो सर इसमें मुझे लगता है आपकी आशंका वेल फाउंडेड है। और अभी तक की ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है या जो सिस्टम है उसके हिसाब से ये बहुत वैलिड लग रही है। जी थैंक सर। यू वेरी मच चरण सिंह साहब। ओके अब सर। इसमें आगे जो चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें और सामने आएंगी, तब मामले आएंगे, तब फर्दर इसमें और इवॉल्व करेगा। लेकिन जो राइट आपने सर। पॉइंट आउट किया कि सर ये जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है, गैप है, ये यहाँ सर बना रह गया है, जो केस सर लॉज और जो एक्सप्रेस स्टैट्यूट है उसके बीच में। राइट ऐसे सर। ही में एक ये थोड़ा सा डेग्रेशन हो जाएगा, लेकिन सब ऑफिसर्स हैं, सीनियर लोग हैं सभी, तो एक और बड़ा, इससे भी बड़ा गैप नया क्रिएट हो गया है सर हमारा बीएनएस के माध्यम में। सीधे प्रिजन से, करेक्शन सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक एकेडमिक डिस्कशन के रूप में हम लोग समझ सकते हैं उसको कि वो गैप हो गया है जो धारा 377 जो आईपीसी की है, जो जी सर। अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करती थी, उसके सर डिलीशन वही है के क्या? साथ में एक बहुत ह्यूज गैप क्रिएट हो गया है, जिस पर चर्चाएं हो रही हैं, उस पर कंट्रोवर्सी है। लेकिन जो चीज़ें लॉ मेकर्स ने ड्यू प्रोसेस से लागू कर दी हैं उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में वो गैप रह गया है। बिल्कुल वो हम सर। लोग के डिस्कशन का एक विषय तो रहेगा ही। वो गैप ये है बीएनएस के 377 हटाने से, सर जो मेल के विरुद्ध, कोई सर एडल्ट मेल के विरुद्ध वो ऑफेंस होता है, या अदर देन वुमन के साथ कोई एडल्ट है, ट्रांसजेंडर है या कुछ है, वो पनिशमेंट उनके मिल साथ रहा वो सर। ऑफेंस होता है, तो वो अभी कवर नहीं हो पाया है राइट सर। नए किसी में। महिला जी के सर। साथ होगा वो तो रेप में आ जाएगा, सर और जो बच्चों के साथ होता है वो जो मेल चाइल्ड के साथ होगा वो पॉक्सो में आ जाएगा। हाँ लेकिन सर। जो एडल्ट मेल के साथ होगा वो कवर नहीं वो हो पा रहा है। इसी राइट तरह सर। ट्रांसजेंडर एडल्ट के साथ होगा वो नहीं हाँ कवर सर। हो पा रहा है। राइट सर। जानवरों के साथ कोई करेगा वो नहीं कवर हो पा रहा है, जो 377 में है। बिल्कुल तो ये सर। चीज़ें हैं, इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो कॉम्पिटेंट हैं उन लोगों के कान तक धीरे धीरे बातें पहुंचेंगी, और आगे जी निकट सर। भविष्य में हमें, आपको और हमारे लिए, जो हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इनके लिए फर्दर क्लैरिफिकेशंस आएंगे। सर थैंक यू एक वेरी और मच एक चरण सिंह। पॉइंट सर, एक पॉइंट और है सर, प्लीज एक मिनट के लिए। एक सर 479 है सीआर अभी नई बीएनएसएस में, जी इसमें सर चेंज तो कर दिया है, बट ये ऐसा चेंज कर दिया है सर, 479 का 1 और 2 बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है सर, कंट्राडिक्टरी। 479 1 और 2 सर। अच्छा। सर ऊपर तो कह रहे हैं सर 479 में ये सर प्रोविजो में डिफाइन कर रहे हैं सर, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड
ऑफ एन एनी ऑफेंस, इसको 1/3 पे छोड़ेंगे सर। और नीचे डाल दिया सर नॉट विथस्टैंडिंग का क्लोज, उसमें डाल दिया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 एंड सब्जेक्ट टू थर्ड प्रोविजो देयरऑफ, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी or trial is more than offense is multiple cases are pending against the president, he shall not be released। तो ऊपर वाला 1 तो खत्म ही कर दिया सर नीचे नोट विथस्टैंडिंग डाल के। तो अब किसी के पास 2 केस हैं तो वो इसमें 479 में कवर नहीं होगा, पहले ये 436A था। बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, वो उस तरह का दिखाना चाह रहे हैं। पहला लिखने की जरूरत ही नहीं थी सर, दूसरे से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इसको ये जो 436 का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा जो मल्टीपल केसेस में है। पहला वो इतना बड़ा लिखने की सर वो व्यर्थ है, इतना बड़ा लिख दिया। मुझे लगता है आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ भी बहुत ही वेल फाउंडेड है और थैंक यू। लेकिन अब इसमें अब हम लोग आपस में एकेडमिक डिस्कशन ही जो हो रहा है वो वही कर सकते हैं। वो तो सर एक PIL डाल के सर इसमें चेंज हो सकता है, वो तो कर देंगे सर, उसको खत्म हो जाएगा। जैसे भी है सर अमेंडमेंट तो हो ही सकती है, संविधान में भी सर एक ही साल में अमेंडमेंट हो गया था, अभी तो ये लागू भी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं और आप अभी फिलहाल इस रूप में हम कुछ इस पे कुछ और इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, हमारा लेकिन काम तो सर बस नोटिस में लाना है ना सर, जो चीजें हैं वो ठीक हो सकती हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो ये जहाँ ड्यू फोरम पे हमारे स्तर से भी इस चीज को आगे डिस्कशन में ये चीजें पॉइंट उठाए गए हैं और ये वैलिड प्रतीत हो रहा है प्राइमा फेसाई, तो इस पे आगे और वो डेलिब्रेशंस करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और ऊपर तक जाए जहां अप स्टेयर्स जहां तक जाना है और फिर वो लोग अपनी कॉल लें। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ये बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही डिटेल इंटरवेंशन। थैंक यू सर। पंजाब से किन्हीं को कुछ ऑब्जर्व करना है कुछ? मेरा एक सबमिशन है सर। सर थैंक यू सर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो अधिकारी हैं उनको कुछ या उनके प्रतिनिधि को कुछ कहना हो। गुड आफ्टरनून, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कमेंड यू फॉर a beautiful presentation and very concise, crisp. Also to Mr. Charan Singh, who had raised 2 valid points, and I'm sure we are going in the right way. इसमें जो मुझे जो समझ में आ रहा है, now we are discussing basically how we are going to train our people in a short period, because maybe the government would like to announce a particular date to start it, either state by state or maybe for the whole country. They would have a time frame. So, as I understand, the time is not very long. It is limited for all of us. So, हमारा main मुद्दा है, apart from the discussing the academic points, how to go for the training, which is a massive task. In fact, in Uttar Pradesh, we have a training. We had a committee formed by Honorable Chief Minister under the presidency of Chief Secretary, chairmanship of Chief Secretary, and the DGP, myself, Home Secretary, and all our members in that. We already had meetings for that, and we are on the way of formulating the design and time frame for how to go for the training for the police personnel as well as jail personnel, prosecution personnel, the advocates, others, and of course the High Court must be looking for this law officers in the state. So that is very, very important. And as you said very rightly about the repealing sections, the sections which the cases which are already in the court, maybe would be there for another 10 years or little more than that. They will continue as per the old act, and these new FIRs will be framed with the new act. So for some time we will be having both the acts in vogue for a couple of years for sure.
So it's a very big task for all of us, for the jail officers and police officers, the investigators, the prosecutors. I mean, there could be a lot of confusions in that. So we have to train our people how we go for this training. And the BPRND has really taken a leap forward. And you people are really doing great, and I must commend you for this. And we have already designed for our jail training in Uttar Pradesh. The course design, as per the BPRND norms, we have already designed for that. And we are encouraging our officers to participate in all the forums wherever we find any opportunity to discuss about this. That is why myself, I am there, my officers there, and in future also there are some trainings are planned. All my officers will be there, and we have sensitized our training institution, which is there since 1940, the jail training institute, the oldest one in India, or maybe probably in the Asia. We have started training the trainers there so that we can do this training faster. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your kind words and kind intervention, sir. To speed up this process and to sensitize stakeholders across the country, Union Home Secretary is slated to hold a meeting on 14th February next week. Next week, 14th February, Union Home Secretary will take a meeting with all chief secretaries of states and UTs, administrators. Sir, so they are trying on their part to sensitize uniformly whole of the country on this account. As sir very rightly said, that this will be a great task for all of us stakeholders. As for maybe, as sir suggested, that maybe for next 10 years or so, we will have to work simultaneously on both the systems. These acts and 3 new acts, 6 acts, all procedures and related things related to those pending cases, or that will so this work is huge for us, all of us stakeholders, sir. And thank you, sir, for your kind words for initiative taken by BPRND. And this academy, Central Academy for Police Training, Bhopal, has also been directed to conduct certain courses, 1-day course and 3 days course. 1 day for senior officials of prison and correctional services. 1-day module is there. In next slides, we will discuss, sir, and we would like to have inputs from sir's side if there is any suggestion to the effect of modification of those modules, sir. And 3 days module for warden to superintendent level rank officers, sir. So that we will discuss, and we will also request on behalf of BPRND and this academy also that sir and other counterparts, other heads or their representatives present here in this webinar may take personal interest to send nominations to attend those courses, sir. Physically, in certain numbers we can handle here also, and others we can manage in a hybrid mode, online, virtual mode. So I am sure that sir's guidance and sir's intervention will motivate other officials also representing other states and union territories, sir. So thank you very much, sir. Thank you very much. You are doing a great job. We have already nominated for all your courses of all ranks. Thank you. Sir, so kind of you, sir. Any intervention from Himachal Pradesh? Himachal Pradesh? Telangana? Any suggestion, intervention from Telangana? No, sir. No, sir. Maharashtra? Good morning. Maharashtra? Good morning. Good morning, sir. Good morning, Sir, Jai I am Hind. from Himachal Pradesh. Sir, I am from Himachal Pradesh, Shimla, sir. Ji, Hello, please. sir. Please, Himachal Pradesh, carry on, please. Bataएं. Sir, we have no any query or question on your presentation, sir. It was very much
useful for us and well framed by you, sir. Thank you, sir. Thank you. Telangana, Maharashtra, Meghalaya, any intervention or suggestion? No, sir. Meghalaya, No, sir. From Meghalaya, we don't have any suggestions. thank you. Jharkhand, Jharkhand, Manipur, Manipur, No, sir. No, sir. thank you. Rajasthan, No, sir. Thank Thank you. you, sir. तो हमारे बीच यूपी से डीजी सर भी हैं, तो सर की परमिशन से आगे की कुछ और स्लाइड्स में और हम लोग उसके करके फिर सर हम लोग इसको Sure. कंक्लूड सर Please. सर थैंक यू सर नेक्स्ट स्लाइड ये कुछ प्रोविजंस के बारे में यहाँ बात हो रही है जो डायरेक्टली कंसर्निंग प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज हैं। इन पे हम डिटेल में अभी ज़्यादा चूंकि समय हो रहा है तो वी मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू डिस्कस दीज इन डिटेल, जस्ट ए कर्सरी लुक ऑन दोज प्रोविजंस। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। Here this in red color, this is old laws provision, like this is written CRPC section 54, whereas present section is I mean BNSS section is 53, and this tax written in green is newly added through BNSS. Otherwise, other normal text in black font is verbatim as it is in CRPC. Similarly, that continues in BNSS, and this green one is addition. So this is related to section BNSS 53, and CRPC corresponding section is 54. Next slide. Attendance of persons confined or detained in prisons. These are the most important provisions related to prison and correctional services. So these are section 301 to 306. Next slide, please. Provisions related to unsound mind prisoners. Next. Sentences, fine, mercy petition, remission, and commutation related provisions. They are enumerated in this slide. Next, please. Solitary confinement related. This is in BNS. This provision is there in BNS. Next. BNS again. Limit of solitary confinement. Next. Negligent and escape of prisoners. These are again BNS provisions which are offenses are made related to these escape of prisoners. Next. Police, public servant voluntarily allowing prisoner of state or war to escape. These are provisions already. Next, please. Appeals, related provisions where prisoners and role of prison and correctional services officials may be there. Next. So, sir, there is these modules I was talking about, 1 day module and 3 days module. Please hyperlink 1 day module first. वन डे मॉड्यूल इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। इसमें सर्स का और सभी जो रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट एंड यूटी से जुड़े हुए हैं
उनका कोई सजेशन इंटरवेंशन इन मॉड्यूल्स के बारे में होगा तो काइंडली फील फ्री, जिससे हम लोग एज फार एज पॉसिबल उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। ऊपर थोड़ा ले जाओ। तो ये किस दिन का रखा है हमने? हाँ, 1 डे है अभी डेट, तो वो आगे उसमें आएगी अगली उसमें। सो दिस फर्स्ट डे 1 का ये तो एक ही दिन का है। इसमें इनॉग्रेशन में वीडियो ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट, जो ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट में जो डिबेट में उसका वीडियो का कुछ सिलेक्टेड पार्ट हम लोग उसमें रहता है। फिर ओवरव्यू ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, जिस तरह से अभी मैंने करने की कोशिश की इसी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में नीचे चलो, चलो नीचे। थैंक यू। तो इसमें नेक्स्ट सेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रोविजन, BNSS सेक्शन 53, इस सेशंस ट्रायल से जुड़े हुए कुछ, प्ली ऑफ गिल्टी, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, प्ली बार्गेनिंग, ये सब संक्षेप में may not be directly related to prison and correctional services officers, but some of them indirectly, most of them indirectly may relate to them. Bail, next. Then those most important attendance of the prisoners, which are directly related to prison and correctional services officials. So those provisions will be also covered in the same session. Evidence in inquiries and trials. Next. Trial and legal aid. Next. Appearance by public prosecutors, permission to conduct prosecution, etc. These are the topics which will be covered in those sessions. Because topics are many, so this coverage will be cursory only. And where this directly relates to prison and correctional services, that should be that will be dealt by those faculty members in more details. Next, नीचे चलें। In next sessions, these provisions will be covered. Next. Revision, miscellaneous, thereafter lunch. Next, नीचे चलो। Session 3, fines, solitary confinement, negligent and escape of prisoners, community services, the Probation of Offenders Act. इसमें गलत लिख गया है परिडा साहब। Probation of Offenders Act, miscellaneous. Next. And in the last session, these topics will be covered. Reforms related to electronic evidence, reforms relating to relevancy of facts. This last session is wholly committed for Bharatiya Sakshi Adhiniyam, BSA, primary and secondary evidence, oral evidence. These most of the things may not be directly related to prison and correctional services officials, but indirectly may be related, and this will not harm to get cursory knowledge and input about these provisions. So this is a 1 day module. वापस चलें। तो इसमें 1 डे मॉड्यूल के बारे में अगर हमारे जो उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें से किन्हीं को इसमें कुछ इंटरवेंशन, कुछ सजेशन, प्लीज सर। थैंक यू सर। तो अब हम इसको 3 डेज मॉड्यूल को और देख लेते हैं। इसमें चीज़ों को मेनली टॉपिक्स तो वही होंगे, बस इसमें समय ज़्यादा रहेगा तो इसमें कुछ टॉपिक्स ज़्यादा
विस्तार से कवर किए जा सकेंगे। तो ये वार्डन से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक 3 डेज मॉड्यूल का डिजाइन है। तो इसमें अगेन शुरुआत फर्स्ट सेशन तो वही सिमिलर है, डे 1 जैसा ही, जो वीडियो पार्लियामेंट्री डिबेट का, फिर ओवरव्यू। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो पहले दिन का बिजनेस सेशन 1 होगा, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन, सेशंस ट्रायल, प्ली ऑफ गिल्टी, वारंट ट्रायल, इनको कवर किया जाएगा। फिर सेशन 2 में प्ली बार्गेनिंग और बेल, ये सेशन 2 में कवर किए जाएंगे। सेशन 3 में अटेंडेंस ऑफ द प्रिजनर्स, बंदियों की उपस्थिति जो कराने की प्रक्रिया और उससे संबंधित सेक्शंस हैं, उनको डील किया जाएगा। और गवर्नमेंट की पावर उससे संबंधित इन्हीं जो 5 सेक्शन हैं 302 से 306, उसी में वेरियस उनको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन, उनकी जो संबंधित 304 सेक्शन में है उसको, प्रिजनर 305, 306। उसके बाद उस दिन के पहले दिन के लास्ट सेशन में ट्रायल एंड लीगल एड, पढ़ो ऊपर, जो सेक्शन 338 से 366 तक कवर हो रहे हैं वो सारे इसमें कवर किए जाने हैं सेशन 4 में, फर्स्ट डे के। नेक्स्ट, चलते जाओ धीरे धीरे, जो बोल दिए वो ध्यान रखो। डे 2 में सेशन 1 में जजमेंट, नीचे चलते जाओ। सेशन 2 में अपील्स, रेफरेंस एंड रिविजन्स रिलेटेड सारे ऑफेंसेस। सेशन 3 में ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, इससे रिलेटेड प्रोविजंस, सेंटेंस, फाइन, मर्सी पेटिशन, और ये तुमने ज़्यादा तेजी से ऊपर कर दिया, बस ध्यान रखो। रीडा, तुमको उसके पास ही बैठना चाहिए। हाँ, सेंटेंस, फाइन, मर्सी पेटिशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन। इसके बाद मिसेलेनियस, अगले सेशन में फिर फाइन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, नेग्लिजेंट एंड एस्केप ऑफ प्रिजनर्स रिलेटेड प्रोविजंस। सेशन 5 में कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज जिन जिन सेक्शंस में पनिशमेंट के रूप में प्रोवाइड की गई है उन 6 सेक्शंस के डिटेल। द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, उसके डिटेल्स। नेक्स्ट, लास्ट डे, डे 3 का सेशन 1 में रिफॉर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मेनली एविडेंस से ही संबंधित है, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रिफॉर्म्स रिलेटेड टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये मोस्टली सब BSA से ही संबंधित रहेंगे। सेशन 2 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेशन 3 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, बर्डन ऑफ प्रूफ। और फाइनल सेशन सर, ये 3 डेज मॉड्यूल का फाइनल सेशन रहेगा, जो ग्रुप डिस्कशंस एंड वे फॉरवर्ड। सो दिस वाज अ 3 डेज मॉड्यूल। तो सर और अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने अपने स्टेट यूटीज़ के, उनका कोई इसमें इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन? चरण सिंह साहब, इस तौर पे हम लोग उत्सुक रहेंगे कि उनको कुछ इसमें कहना है। सर और चरण सिंह साहब ने काफ़ी इंटरवेंशन का रहा है। सर, आई हैव ए सजेशन अबाउट दिस। फर्स्ट डे, सेकेंड डे तो मेरे हिसाब से आपने बहुत बढ़िया बनाया है, परफेक्ट। थर्ड डे में जो इतना समय हम लोग दे रहे हैं वो सब हमको एक्चुअली नहीं चाहिए। प्रोबेबली यू डोंट नीड सो मच फॉर द प्रिजन ऑफिशियल्स, जो प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, नोइंग इज फाइन, बट व्हाट आई फील कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरे ये को 2 क्लास में सो ही आप कवर कर सकते हैं। और देन यू कैन फाइंड ए स्लॉट कंप्लीट से अबाउट 1.5 hours
फॉर मेकिंग ब्रेकआउट सेशंस, वो अलग अलग ग्रुप्स, बाद में तो ग्रुप डिस्कशन लिखा है, बट आई मीन टू से कि ब्रेकआउट सेशन करके उनको कुछ टॉपिक्स इसी पे दे दे, पर्टिकुलरली नए में क्या था और पुराने में क्या है डिफरेंसेस, सम प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसको उन्होंने फिर पोस्ट लंच में प्रेजेंट भी कर लेंगे, करके इसको फिर फाइनल जो है एक टेक अवेज क्या है कि ये डिफरेंसेस क्या क्या हुआ फॉर ऑल दिस एक्ट्स में, हमारा डिफरेंसेस क्या रहा। मुझे लगता है थोड़ा सा वो बीपीआरएनडी का भी स्टाइल है वही कि ब्रेकआउट सेशन करना, ये करना। एमएचए ऑल्सो सभी में आजकल वही कर रहा है। आई हैड अटेंडेड 3 conferences in last 6 months, the DGP's conference and the DG Prisons conference and the Police Science Congress, सभी में वही स्टाइल था। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टाइल, यू मे कंसिडर फॉर दैट। सर थैंक यू सो मच सर। मुझे भी मैं यही लग रहा था सर का जो है वही एविडेंस को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इतना ज़्यादा 3 सेशन फिर दे देना, उससे ज़्यादा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, ये जो सर ने सजेस्ट किया है वही बेटर रहेगा। तो इसी को हम इसी के अकॉर्डिंगली सर कस्टमाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके सजेशन के लिए। तो ये 2 सेशन हो जाएंगे फाइनल डे के लास्ट के, जो जिनमें सीधा बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, ब्रेकआउट सेशंस, और फिर इन चीज़ों को फिर वाइंड अप करते हुए वो वे फॉरवर्ड और दूसरे लास्ट सेशन में हो जाएगा सर। और ये मॉड्यूल हमको दरअसल सर बीपीआरएनडी हेडक्वार्टर से मिला था, तो मैं वहाँ भी सर लोगों को जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी बता दूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये आया है और ये हमें अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर लेना चाहिए। और कम से कम मैं अपना सीएपीटी वाले में इसी के हिसाब से काम करने की सर कोशिश करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। और कोई इंटरवेंशन, कोई सुझाव अन्य स्टेट यूटीज से? हरियाणा चरण सिंह जी। ओके थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड देख लें सर। बस अब हम लोग खत्म करेंगे। बस मैं एक चिट्ठी जो यहाँ से अनुरोध गया है उन चिट्ठीज का हाइपरलिंक देख के, लेटर फॉर एनसीएल्स, इसको जरा हाइपरलिंक कर दें प्लीज। ये सर चिट्ठी गई है सभी लोगों को। मेरा ये अनुरोध गया हुआ है वनडे कोर्स को, जो क्या डेट है वनडे कोर्स की? 19 फरवरी का वनडे का हम लोगों ने रखा है सर। तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट गई हुई है। इसके बारे में अनुरोध है कि नॉमिनेशंस आ जाएंगे तो ये बेहतर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशंस। हम लोग यहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया हुआ है सीएपीटी भोपाल में, तो हम उसको टू द हिल्ट उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। अभी तक ह्यूजली अंडर यूटिलाइज है हमारा ये इंफ्रा और हमारी ये सुविधाएं, और ये तो हम लोग इसको पब्लिक इंटरेस्ट में और नेशन बिल्डिंग के इंटरेस्ट में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका अटमोस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए सर। इसके लिए सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने अपने स्टेट यूटीज से ज़्यादा नॉमिनेशन भेजें फिजिकल, और फिर फिजिकल ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, फिर बचे हुए अपने इसके वर्चुअल मोड से जुड़ जाएंगे। ये वनडे वाले के बारे में। दूसरा चिट्ठी दिखाओ। ये सभी स्टेट से रिक्वेस्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो यहाँ से बिल्कुल भौतिक रूप से, ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से बहुत करीब है यहाँ से, उनके बारे में विशेष अनुरोध है कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए 3 डेज का कोर्स के बारे में, यहाँ सीएपीटी भोपाल आपके अधिकारियों के लिए बहुत पास पड़ेगा, उनका समय, कीमती समय कम ये होगा, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से विशेष तौर पर अनुरोध है कि इसका स्लॉट ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इसको ये कर लें। और इनके अतिरिक्त बाकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से भी अनुरोध है कि वो अपने फिजिकल मोड में जितना भेज पाएँ, और नहीं तो इसके वर्चुअल मोड के लिए तो अधिकतम नॉमिनेट कर ही लें, जो वहाँ बैठ के भी वो लोग कुछ इससे जुड़े रह सकेंगे, तो कुछ उनका सेंसिटाइजेशन हो सकेगा। तो यही था सर। और सभी अधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव, लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम सीएपीटी भोपाल, वी थैंक यू वेरी मच। यही था सर।
Thank you very much. Very nice presentation. Thank you, sir. Thank you very much, seniors and all representatives of senior officials from state and UTs. Thank you very much, ladies and gentlemen. Jai Hind. Have a nice day. जय अब हम लोग डिस्पर्स हो सकते हैं. Thank you, sir. जय हिंद सर. जैन सर पीपीटी शेयर करवा दिया जाता सर. Thank you, sir. बिल्कुल मैं कुछ देर में ये इनको मैं लगा देता हूँ और वो पीपीटी जल्दी ही आपको शेयर कर देंगे सभी. परिडा साहब आप आपकी सर. थैंक यू ऑफिसर्स. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Teaching is fine, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your kind words. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam. म्हणजे